Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are fit and healthy. So student, welcome back to your EVS class. Today date is 27 November 2020 and I am teaching you chapter number 22 and the name of the chapter is India and the World. India and the world. So student, let's do a little recapitulation what we have done in our previous video. So student, in the previous video I explained you features of a map. So what are the features on the map? That is direction, color, sign, symbols and scale are used to provide information on a map. Is it clear student? Then only we are able to understand the language of the map. Then only we are able to understand the language of the map. So I do the quick recapitulation of the topic which I explained you in the previous video. So direction. See student, in all the maps directions are given and these direction helps to locate the right place. These direction help us to locate the place shown on the map. Upper direction is the direction which is on the top, that is always north. Bottom is the south. Towards your right hand side direction, that is the east, and towards left hand direction, that is the west. And see, some colors are also used on the map. If the color is blue, it means we are talking about the water bodies like sea, ocean, rivers, lakes. And if the color is green on the map, then green colors indicates about the plains. And student, if you see yellow color on the map, what does it mean? It means with the yellow color we are showing area higher than plains. And student, if you see dark brown color in the map, so it means that what does it indicate? It tells us that we are talking about the mountains. And on page number 126, symbols are shown. Already in the previous video I explained all the symbols which are given in the book, and even I told you to draw this symbol in your classwork copy also. After that student, picture of a globe is given. See, after that the picture of the globe is given. So what is a globe? Globe is a small model. Globe is a
small model of globe is the small model of the earth. After that, student, I explain you the earth has two types of movements. One is rotation. One is rotation. What does it mean? Rotation of the earth on its own axis. The rotation of the earth on its own axis. And what form due to the rotation of the earth? Student, due to the rotation of the earth, day and night are formed. Due to the rotation of the earth, student, day and night are formed. And the another movement of the earth is known as revolution. Another movement is known as revolution. Revolution means earth is moving around the sun, and this movement of the earth is known as revolution. And see, all the 8 planets, they move around the sun in a fixed path, and this fixed path of the planet is known as orbit. This fixed path is known as orbit. And now, student, the question arises, due to the revolution of the earth, what happens? So seasons are formed. Seasons are formed. We know that we have different seasons, and these seasons are formed due to the revolution of the earth around the sun. So now earth is rotating on its axis. This is a imaginary line. ये हमने imagine किया, रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है. So for better understanding, उसे स्टडी करने के लिए हमने ऐसा माना है कि अर्थ इज टिल्टेड एट द एंगल ऑफ 23.5 डिग्री. इज इट क्लियर? नाउ स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट विद द लैटिट्यूड्स. See, student, what are latitudes? What are latitudes? Okay. They are imaginary. They are imaginary lines running from west to east. Okay. So
latitudes. See, there are two type of lines on the earth. One is latitudes and another one is longitudes. So first of all student, let understand what are latitudes. They are imaginary lines. ये मैंने आपको बोला है कि अगर आप सोचो कि अर्थ जो हमारा प्लेनेट है हम उस पे ये लाइंस खोजें तो आपको कभी नहीं मिलेंगी. ये ऐसा हमने इमेजिन किया है, ठीक है, ऐसा हमने अपनी स्टडी के लिए इमेजिन किया है. रियल में ऐसी आपको कोई लाइन नहीं मिलेगी. तो दे आर इमेजिनरी लाइंस रनिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन का आप लोगों को पता ही है. ईस्ट इज टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड एंड वेस्ट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड. सो ये कहां से रन कर रही है? वेस्ट टू ईस्ट. इज इट क्लियर? सो व्हेन यू सी फॉर एग्जांपल, दिस इज अ अर्थ. मान लिया बेटा ये क्या है? अर्थ है. सो latitudes are the lines and these are lines, horizontal lines हैं. ये कैसी लाइन्स है? horizontal. These lines are horizontal. These are horizontal lines, जिसको आप लोग मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में स्लीपिंग लाइन भी बोलते हो. When the lines are in this form, तो this form of a line is known as horizontal. ठीक है, इसे स्लीपिंग लाइंस भी बोलते हैं. So horizontal lines, they are imaginary lines running from west to east. For example, now we will study some of the important line which is given in the picture also. On the earth पे जो कुछ important line है, we will study that. Now see student, this is the picture of a earth. Now the line this is 0 degree. So student, the line which divide the earth into two equal parts. Upper part is known as north hemisphere, the upper part is known as north hemisphere, and this part is known as southern hemisphere. Is it clear? So and this line which divide the earth into two equal parts, ये क्या है बेटा? अर्थ को हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर रही है, ऐसा हमने इमेजिन किया है. ठीक है, दिस लाइन डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स एंड इट डिवाइड हॉरिजॉन्टली. दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइंस. दैट इज आल्सो known in mathematics language a sleeping line. So it divides it into two equal part. Upper part is known as northern hemisphere and the bottom part is known as southern hemisphere. And the line which divide it into two equal part, that line is known as, this line is known as equator. और व्हाट इज द एंगल हियर? 0 डिग्री एंगल. इज इट क्लियर? और थोड़ी सी रिकैपिटुलेशन कर देते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगी चीजें. देखो लैटिट्यूड्स क्या है? दे आर इमेजिनरी लाइंस रनिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट.
Okay, this I take the picture of the earth, and this line divides the earth into two equal parts. And how it is dividing the earth? It is dividing the earth horizontally. So upper part is known as northern hemisphere. Upper part is known as the northern hemisphere, and bottom part is known as the southern hemisphere. Is it clear? And the line which divides the earth into two equal parts horizontally, that line is known as equator. This line is known as equator. Is it clear? Now see student, some of the other very important lines, that horizontal lines which are discussed in your book, is in the north part, and these all lines are parallel. ये जितनी भी लाइन्स है बेटा, all these lines, ये जितनी भी लाइन्स हैं, ये these are parallel to each other. Is it clear? ये मीट नहीं कर रही हैं. These are parallel to each other. ये कैसी हैं? Parallel है. They are parallel to each other. And now the two, ये जो थोड़ा मैं बोल्ड कर देता हूं, this is equator. It divides the earth into two parts, and the some of the other important lines, horizontal lines on the earth are Tropic of Cancer, and it is at 23.5 degree. Is it clear? And then Arctic Circle, this is at 66.5 degree, and these two lines are in northern hemisphere. ये दोनों lines किसमें है बेटा? These two important lines are in northern hemisphere. And some of the important lines which are given in your book in the southern hemisphere, that is Tropic of Capricorn 23.5 degree south, and Antarctic Circle 66.5 degree south. So these are the two other important lines. Okay, in two are in northern hemisphere and two are in southern hemisphere, and we measure it in degree. ठीक है, हम किस में मेजर करते हैं? डिग्री में मेजर करते हैं. Now the another important thing is that how many latitudes lines are here. So student, it is above. See, this part divided into two equal parts. Okay, so upper pole, यहाँ जो upper pole बनेगा, this is the north pole, and this is the south pole. Upper is the, this is the north pole and this is the south pole. और इस पे जो एंगल होता है that is 90 डिग्री एंगल होता है, और इसे किस पे मेजर करते हैं? एंगल्स में. तो यहाँ भी 90 डिग्री होगा और यहाँ भी 90 डिग्री होगा. तो 90 लाइन्स आर अबव नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन, हाउ मेनी latitudes lines are there? So how we will calculate it? Very easy method. 90 lines in a northern hemisphere and 90 lines in southern hemisphere. So 90 plus 90, 90 lines in northern hemisphere, 90 lines in southern hemisphere. So 90 plus 90, and there is one more line. This is, that is an equator, जो कि किसने एंगल पे है? 0 डिग्री एंगल पे है. Because this equator line divides it into two equal parts. So 90 plus 90 plus 1. So what does the answer come? 181 latitudes. So
Many times this question can be asked in the exam also. How many latitudes lines? So their number is 181. 90 in the northern hemisphere, 90 in the southern hemisphere, and plus 1 this line which is known as equator, and here the angle is 0 degree. So 90 plus 90 is 180, and 180 plus 1 is 181 latitudes lines. Is it clear? Now student, what is, see the North Pole is at now just I draw a diagram. This is equator. Here it is North Pole. North Pole. And this is South Pole. तो North Pole का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री. South Pole, this is also 90 degree. Is it clear? Now the North Pole is at 90 degree north, and the South Pole is at 90 degree south. And I already tell you that all these lines are parallel. All lines are parallel. And never meet. This thing you have already studied in mathematics also, कि parallel lines कभी भी आपस में meet नहीं करती हैं. So all the lines, all lines are parallel and they never meet. And next thing is they are measured in degrees. They are measured in degrees. ये भी मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया था. They are measured in degrees. And why we use latitude line? They help us to find the place. इन लाइन से क्या पता चलता है? लैटिट्यूड लाइन से हम प्लेस फाइंड आउट करने में ये हेल्पफुल होती हैं. इज इट क्लियर? नोट डाउन. दे हेल्प अस टू फाइंड प्लेसेस. इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट लैटिट्यूड. एक बार रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं. लैटिट्यूड्स क्या है बेटा? दीज आर हॉरिजॉन्टल लाइन. ये सारी लाइंस क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइंस है. ठीक है. एक मेन लाइन है जो 0 डिग्री एंगल पे है. इट इज डिवाइडिंग द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट. अपर पार्ट को हमने बोला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और बिलो बॉटम पार्ट को हमने बोला साउदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है. यहाँ पे होगा आपका नॉर्थ पोल, यहाँ 90 डिग्री नॉर्थ है. दिस इज द साउथ पोल एंड इट इज 90 डिग्री साउथ. और जो आपकी इक्वेटर है दिस इज 0 डिग्री. और हम इसे मेजर किस में करते हैं? डिग्रीज में मेजर करते हैं. ठीक है. आफ्टर दैट ऑल द लाइंस, मैंने आपको बताया कि जितनी भी लाइंस है दे आर पैरेलल टू ईच अदर. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दिस लाइन विल नेवर मीट. पैरेलल लाइंस आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा कि पैरेलल लाइंस आपस में कभी भी मीट नहीं करती, जुड़ती नहीं, मिलती नहीं है.
ठीक है, अनदर क्या हो गया, दे आर मेजर्ड इन डिग्री. ओके, एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट दे हेल्प अस टू फाइंड प्लेसेस. सो इन लाइंस से की हेल्प से हमको प्लेसेस की लोकेशन के बारे में पता चलता है. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट लैटिट्यूड्स. नाउ लेट डिस्कस लॉन्गिट्यूड्स. See, now let's discuss about longitudes. So these are जो लैटिट्यूड्स बताया था दैट आर हॉरिजेंटल लाइंस, और these longitude how which type of a line are they are vertical, or in the language of mathematics you can also say that standing line. If you draw a line in this manner, this line is known as vertical. This line is known as vertical. So longitudes are which type of a lines? These are vertical lines. So now these lines, ठीक है, वो लाइन क्या थे, दे आर मूविंग फ्रॉम इमेजिनरी लाइंस थी जो वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रही थी और सब पैरेलल थी. दे नेवर मीट विद ईच अदर. नाउ these lines are, ये भी कैसी लाइन है बेटा, इमेजिनरी लाइन है. मैं अभी भी आपको बता रहा हूं कि आप टॉर्च जला के आंख में खोजोगे कि लाइंस है, तो लाइंस कुछ नहीं है, ये हमने एक इमेजिन किया है. ठीक है, दीज लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस. ये क्या है, सेमी सर्किल्स है, इमेजिनरी सेमी सर्किल्स. running from north to the south pole. North pole to the south pole. Now अब देखो, see all of you, see on the board. Now for example, ठीक है, अब जब हमने लैटिट्यूड्स की बात की थी तो वो कैसी थी, हॉरिजॉन्टल लाइंस थी. दे आर हॉरिजॉन्टल लाइंस. और ये आपका था इक्वेटर. इक्वेटर ने इसे डिवाइड किया था टू पार्ट्स में. अपर पार्ट्स क्या था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला था साउदर्न हेमिस्फीयर. और ये क्या था, हॉरिजॉन्टल लाइन थी. नाउ लॉन्गिट्यूड्स दे आर वर्टिकल लाइन. ये कैसी हैं, वर्टिकल लाइंस हैं. और ये इस तरह इसको डिवाइड करेंगे. ठीक है, सो दिस पार्ट इज नोन एज वेस्टर्न और दिस पार्ट इज नोन एज ईस्ट. ठीक है, जैसे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था, साउदर्न हेमिस्फीयर था, अब ये वेस्ट हो जाएगा.
दिस इज द वेस्ट हो जाएगा एंड दिस इज द ईस्ट, ठीक है। एंड द लाइन, जैसे वहां पे हमने क्या बोला था, इस लाइन का हमने क्या नाम रखा था, इक्वेटर। इसका क्या नाम था इस लाइन का, इक्वेटर। अब इसका क्या नाम हो जाएगा, जीरो मेरिडियन। द लाइन विच डिवाइड इट इनटू टू पार्ट, जिसने अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वेस्ट और ईस्ट में, इसे हम लोग कहते हैं जीरो मेरिडियन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।